4:52 p.m. 27 man's system should be stopped, but man wants to grow up by stopping the supernatural divinity system in man's life. There is an argument that in such a situation, if the protection of the end of prophethood comes to the Islam or the whole human beings while God's definition and authority of divine laws is controversial in whole global religious, then the system of pig syrup would have been implemented. Then all are entitled to escape from the head and body while the solution of peace and justice is unsatisfactory. The use of authority in the syrup is characteristic of a believer by day and a disbeliever by night. Followers of the Quran and Bible or Torah or Bhagavad Gita or Granth of Sikhism all are controversial for each other. The better solution is God's wisdom. But solution is childish ego, or hated without real love. Acceptance is impossible. So, these are human beings who are authorized to make sacrifice for eternal peace of the earth. Because God always proved himself within scriptures of killing the man, and Islam in Pakistan is also a divine purpose. The tired life of human beings is leaking last breath. There is ever need to recollect the scattered peas and prosperity of the differentiated groups of the nation. Islam allows the followers to give respect in active way to the other thoughts and believers. Perhaps it is the only way to save the peace and prosperity of the global world. The human rights are also saved in Bible, Quran and other main religious thoughts, but still the human rights are only bound in pages, whereas its implementation is the real service of humankind. The Quran clearly gives respect to Bible, Torah, and Sharia of Prophet Moses, peace be upon him. The teachings of Jesus Christ are also part of faith. Not only by tongue but also by practice is the real respect to the holy and divine education. While Jesus is still living in heaven and the prophetic authority of the mighty prophet is still in Chilangay able for whole human beings. It is sin and divine crime if the prophethood of him is said to be finished. Quran proves his prophethood is still authorized and no Muslim can challenge the authority of Quran. A believer is not above the divine books. The Pakistani people have been suffering since the Independence Day. The reason is loss of divinity belief and disrespect of the living power of heaven. Lu authority of Jesus Christ, he is the real God's soul which is sinless, while drive. In Sikh says we are all Ru Allah, it is blaspheme because God's soul must be sinless, and Dr. Nike is not pure soul, he cannot make miracles as Jesus Christ did. Quran respects his divinity but Nike like false believers disrespect the divine soul. It is the real cause of the unrest of Islamic world. Quran says him light of God and believer says Jesus Christ will be the slave of Imam Mehdi. The disrespect of Quranic verses is unforgivable. The believer must keep in mind. Quran is divine authority, not the ahadith of the after collection. The true belief is still incomplete and its completion is the trial of every believer of Islam. Similarly, Christ believers must remember the love and sacrifice of Jesus Christ for the rebirth of pure life is purposeful teaching of Bible. No Christian believer can take revenge for enmity and no Christian can impose wars against any territory. The bloodshed is sever sin in biblical teaching. Islamic countries must be protected for the trial of real faith. The conspiracy of crusades is blaspheme of Bible and the heavenly spirit of God. The only way to save the innocent lives of human beings is the first and last duty of believers. Without the practice faith on divinity is loss of goodness. And hell is waiting for such terrors of the earth, even it is America, Israel, Russia, China or Pakistan, no superpower can cause bloodshed of ininocent people on the earth. Messinger. S.K. Anoosh.
शाम सुबह के 4:52 PS इंसान का निजाम बंद होना चाहिए, लेकिन इंसान की जिंदगी में मौजूद माफोक अलफितरत अलूहीयत के निजाम को रोक कर बड़ा होना चाहता है। एक दलील ये है कि ऐसी सूरत हाल में अगर खत्म नबूवत का तोहफ़ इस्लाम या तमाम इंसानों के हाथ में आ जाता है, जबकि खुदा की तारीफ और अहकाम अलाई का अख्तियार तमाम आलमी मजहबियों में मुतजाद है, तो सूर के शरबत का निजाम नाफज हो चुके हैं, तो सब सर और जिस्म से फरार के हकदार हैं, जबकि अमन व इंसाफ का हिल गैर तस्वीर बख्श है। शरबत में अख्तियार का इस्तेमाल दिन को मोमन और रात को काफिर की खसूसियत है। कुरान और बाइबल के पैरोकार या तवरा या बगूद गीता या सिख मत के ग्रंथ सब एक दूसरे के लिए मुतजाद हैं। उसका बेहतर हिल खुदा की हिकमत है, लेकिन हिल बचगाना आना है। यह हकीकी मोहब्बत के बगैर नफरत को कबूल करना नामुमकिन है। लिहाजा ये हैं वो इंसान जो जमीन के अबदी अमन के लिए कुर्बानी देने के मजाज हैं, क्योंकि खुदा ने हमेशा अपने आप को सहीफों के अंदर इंसान के कत्ल का सबूत दिया, और पाकिस्तान में इस्लाम भी एक खुदाई मकसद है। इंसानों की थकी हुई जिंदगी आखिरी सांसें ले रही है। कौम के मुतफर्रक गरोहों की बिखरी हुई मुटर और खुशहाली को याद करने की सख्त जरूरत है। इस्लाम पैरोकारों को इजाजत देता है कि वो दूसरे अफकार और मोमिनीन को फाल तरीके से एहतराम दें। शायद ये आलमी दुनिया के अमन और खुशहाली को बचाने का वाहिद रास्ता है। इंसानी हक़ूक़ को बाइबल, कुरान और दीगर अहम मजहबी अफकार में भी महफूज किया गया है, लेकिन फिर भी इंसानी हक़ूक़ सिर्फ सिफ़हात में बंधे हुए हैं, जहाँ उस पर अमल दरामद होता है। इंसानियत की हकीकी खिदमत कुरान ने वाज़ तौर पर बाइबल, तवरात और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत का एहतराम किया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात भी ईमान का हिस्सा हैं, न सिर्फ जुबानी बल्कि अमली तौर पर भी। मुक़द्दस और अलही तालीम का हकीकी एहतराम। जबकि ईसा अलैहिस्सलाम अब भी आसमान पर रहते हैं और उस अजीम नबी की पेशन गोई की अथॉरिटी अब भी तमाम इंसानों के लिए काबिल तक़लीद है। ये गिना और अलाई जुर्म है अगर कहा जाए कि उनकी नबूवत खत्म हो गई। कुरान उसकी तस्दीक करता है। नबूवत अभी तक मजाज है और कोई मुसलमान कुरान की हाकमियत को चैलेंज नहीं कर सकता। एक मोमन आसमानी किताबों से बालातर नहीं है। पाकिस्तान अवाम आज़ादी के दिन से ही मिसाइब का शिकार हैं। उसकी वजह अलूहीयत के एतकाद का नुकसान और आसमान की जिंदा ताकत की बेइज्जती है, जो कि बेगिना है। जबकि डॉक्टर नसाइके कहता है कि हम सब रोह अल्लाह है। ये तवहन है, क्योंकि खुदा की रोह बेगिना होनी चाहिए, और डॉक्टर नाइक पाक रोह नहीं है। वो मुअज्जज़ात नहीं बना सकता जैसा कि ईसा मसीह ने किया। कुरान उनकी अलूहीयत का एहतराम करता है, लेकिन नाइक जैसे झूठे मोमिनीन रोह अलाई की बेइज्जती करते हैं। ये आलम इस्लाम की बदआमनी की असली वजह है। कुरान कहता है इसे खुदा का नूर, और मोमन कहता है कि ईसा मसीह इमाम महदी का गुलाम होगा। कुरानी आयात की बेहरमती नाकाबिल मुआफी है। मोमन को जहन में रखना चाहिए, कुरान अख्तियार अलाई है, न कि बाद की अहादीस। हकीकी अकीदा अभी नामुकम्मल है और उसकी तकमील हर मोमन इस्लाम की आजमाइश है। इसी तरह मसीह ईमानदारों को यसु मसीह की मोहब्बत और कुर्बानी को याद रखना चाहिए, जो कि खालिस जिंदगी के दोबारा जन्म के लिए बाइबल की बामकसद तालीम है। कोई ईसाई मोमन दुश्मनी का बदला नहीं ले सकता, और कोई मसीही किसी इलाके के खिलाफ जिन्हें मुसलत नहीं कर सकता। बाइबल की तालीम में खूनरेज़ी संगीन गिना है। हकीकी ईमान की आजमाइश के लिए इस्लामी ममालिक को तोहफ़ फ्राहम करना चाहिए। सलीबी जंगों की साजिश बाइबल और खुदा की आसमानी रोह की तवहन है। इंसानों की मासूम जानों को बचाने का वाहिद तरीका ईमान वालों का पहला और आखिरी फरीज़ा है, जिस पर अमल किए बगैर अलूहीयत पर ईमान लाना नेकी का नुकसान है, और वो रोए जमीन पर ऐसी दहशतगर्दी का इंतजार कर रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, इसराइल हो, रूस, चीन हो या पाकिस्तान। कोई भी इस पर पावर खाने पर बेगिनाहों का खून नहीं बहा सकती। मैसेंजर, अनूश।